will do the energy in the magnetic field or energy stored in a magnetic field. So we have seen that if you have an inductor and if you pass a current, there is a generation of magnetic field. Okay, this we already know. And this is nothing but as if the power you give this, it is being converted, means electrical energy, whatever you are giving, that is obviously generated from some thermal energy or chemical energy. When you give that energy to an when you supply that energy to an its normal reaction is to convert that into a magnetic field or in the form of magnetic field. So it is something like it is the inductor is storing the energy, whatever you get, in the form of magnetic field. So we will try to calculate how much energy is stored when you have a magnetic field. ठीक है, तो हमें मेन जो हमारा मोटो है that is how much energy is stored when you have a magnetic field. Some of the formula we have, for example, सर थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए, अच्छा आवाज कम आ रही है। So some of the formula regarding inductor, I think we have also derived quickly that energy stored in the inductor is half Li square. I think we have done that. मेरे ख्याल से कहीं पे derive किया होगा. Otherwise, Yes. even if you, है ना, we have done. Even if you don't remember, work done means if you try to move a charge through the coil, which is of inductor, to a one complete cycle, means from where you start, yani positive terminal या negative terminal से you are trying to move the electron to the positive terminal. So one complete cycle, how much work you have to do per unit of charge, that is nothing but it is equal to your EMF, induced EMF, है ना. तो आपका जो भी induced EMF होगा उसके against, that is a back EMF, and against that you have to supply the energy per unit charge. And we have also seen, or we can write this formula as dW equal to minus EMF dq. And if we find power, means work done per unit time, work done per unit time, how much energy you have to supply per unit time, that is equal to minus this dq by dt, which can be written as minus mi, which is a current which you are providing in the inductor. So minus emf and current, and we already know that emf can be written as minus l di by dt for the inductor. ये भी फॉर्मूला अलग से है, which is due to yes sir. Faraday's कह लो या Lenz's law कह लो, कैसे भी कह लो, but this is already there. Minus L is a constant of proportionality, and how the current is changing, that is actually generating the EMF. So we can put E equal to this one in this equation, and we get dW by dt, which is equal to EMF is minus of L, so this will become L di by dt, and we can write this as dW, which is equal to L di, sorry, there is one I also, na, this I, Yes sir. this I is here, so there is I is there, this I, and E induced EMF is L di by dt, L di by dt, so di by dt, so this is nothing but it is L I di. So we find that total work done will be half L I square. This is what the energy is stored in a inductor, but this is in terms of inductance value and current which you are passing through that. We can write this equation in more general way, that is we have to write this equation either in magnetic field form, because we are finding that how much energy is stored when you generate a magnetic field.
तो आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहे हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, परमानेंट मैग्नेट हो या आपका करंट से जनरेट हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड, तो वॉट एवर द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग जनरेटेड, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड. तो इफ वी कैन रिप्लेस दिस फॉर्मूला बाय अ मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, देन वी गेट अ जनरलाइज्ड फॉर्म कि वही इंडक्टर में हमने जो करंट दिया था उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और अगर ये मेरा वर्क यानी ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड था इंडक्टर में, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाई डोंट वी राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली. ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है एनर्जी, तो वी ट्राई टू राइट दिस फॉर्मूला इन द मैग्नेटिक फील्ड form only. So we will try to do that, and we will get a general equation that if there is any magnetic field, then this much energy is there. So the formula was, which we have written here, that we know that phi, it is phi m, which is the flux. Flux is number of line or number of field lines crossing any particular area. So this is equal to Li. Okay, and we also know that phi m is b dot da. ठीक है, तो कोई भी एक सरफेस ले लो, उस सरफेस को कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, जस्ट यू हैव टू ऐड अप इन अ स्मॉल पैचेस एंड ऐड देम, एंड दैट विल बी योर फ्लक्स. So this can be written as del cross A. A is the vector potential because we are replacing B in terms of del cross A dot dA. तो कोई एक सरफेस है, उस सरफेस के अराउंड जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, वो सरफेस क्लोज्ड हो सकता है, वो इन हो सकता है, आउट, जो भी सेंस आप ले लो. सो दैट विल बी समथिंग लाइक दैट. सो we can replace B by A, that is B is the magnetic field, A is the magnetic vector potential. And this equation del cross A dot dA, which is a surface integral, can be converted into a line integral A dot dl. Line integral means the surface which is enclosed by any loop, you can say. So any surface which is closed by any particular loop. थोड़ा सा ये अभी तुम्हें डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा कि एक लूप कैसे सरफेस को क्लोज कर सकता है, या सरफेस का एंड एक लूप कैसे हो सकता है. बट वी विल सी द डायग्राम आल्सो व्हेन वी डू द मैक्सवेल इक्वेशन. तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी एक लूप है, वो लूप जो सरफेस ड्रॉ कर रहा है, मींस हमारे दिमाग में हमेशा घुसा होता है कि लूप इज सर्कुलर. लूप इज always circular and the surface which is enclosed is always circular. It is plane, but it is not possible all time that could be a plane. It can be any curved surface, so that can also have a circular loop. So this is your dl is the element, small length element along the loop perimeter. So this आपको बुक में भी मिलेगा, ग्राफिक्स में p लिखा है. p is nothing but the perimeter of that particular loop. Okay, जिसको सरफेस, जिस लूप से सरफेस क्लोज हो रहा है. Okay, so this is actually flux, magnetic flux. We can write in this form, and we also know the magnetic flux, which is as Li, which is actually concerned with the inductance. So we can equate these two. It means Li must be equal to A dot dl p, whatever the perimeter you have took. Then we can write that वर्क. एक बार ऊपर जरा फॉर्मूला देखो, वर्क का क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज हाफ एल आई आई. ओके, so what we have written, half Li I. So this can be written as half I, and Li is equal to this one, that is over a closed loop P. It means what we can do, we can take I inside, क्योंकि I का जो डायरेक्शन होगा वो DL का डायरेक्शन और I का डायरेक्शन सेम होता है. यानी जो भी करंट आपके DL पे रोटेट कर रहा है, जिससे आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में जनरेट हो रहा है, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन. I और DL का डायरेक्शन सेम होता है. तो आइदर आप डॉट प्रोडक्ट I के साथ कर लो या DL के साथ कर लो, इट हार्डली गोइंग टू चेंज. I को अज्यूम कर सकते हो समटाइम वेक्टर. ग्रिफिथ्स में शायद कहीं पे एक जगह मेंशन किया हुआ है कि current is also a vector quantity,
Have anyone gone through that particular paragraph? Yes sir, yes है sir. ना, कहीं पे एक I मेंशनड है, is बट equal to lambda v vector करके कुछ यस, बताया हुआ है। हाँ, तो वहां पे वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाई आई विल टेक आई एज, और ग्रिफिथ्स ने बोला है कि आई इज अ वेक्टर, बट वी आल्सो नो दैट आई इज अ स्केलर, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। बट ये तब तक ही है जब तक आप सर्किट के सेंस में बात कर रहे हो। जब आप इस तरह के केसेस में बात करो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें आपका सर्किट नहीं है, मीन्स यू डोंट हैव अ वायर, कि वायर को आपने बेंड किया फिर उसको ऐड किया तो देखा कि आई प्लस आई हमेशा टू टाइम्स ऑफ, या जो भी आई प्लस आई आता है, वी डोंट हैव आई प्लस मीन्स आई स्क्वायर प्लस टू आई कॉस थीटा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं आता अगर हमने कोई एंगल रखा है दो वायर के बीच में। सो दैट इज व्हाई वी नेगेट की ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट समहाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ग्रिफिथ्स में वो पैरा आप देख करके, मेरे ख्याल से मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा उस पैराग्राफ का, एक सेकंड होल्ड करना। तो उसमें मैं पैरा बता दूंगा आपको जिसमें पढ़ सकते हो। तो आई इज अ, आई कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। इन दिस केस आई एंड डीएल आर इन द सेम डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में उनका फर्क नहीं है, जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में डीएल है, जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में आई है। तो आई कैन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट रिप्लेस देयर पोजीशन। What I will do, I will take the I inside, so I can write I dot, sorry, A dot I dl। ठीक है, इस I को हमने अंदर इंटीग्रेशन में लेके गए, क्योंकि I हमारा कांस्टेंट ही हम लेके चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम सब कुछ मैग्नेटोस्टैट से कर रहे हैं अभी, तो I हमने अंदर लिया, और A डॉट I, वैसे A डॉट dl था बट dl को हमने बाहर ले लिया। इट हार्डली मैटर्स बिकॉज द वेक्टर का डायरेक्शन से कोई ज्यादा हमारे एंगल में चेंज नहीं आएगा, और वी कैन राइट I dot A or you can write A dot I. But what give us the benefit when we do this one, that we can generalize this formula. We can generalization of I का generalization form क्या है, J। I क्या है, I को हम जनरलाइज फॉर्म में क्या करते हैं, अगर वो वॉल्यूम के सेंस में कहीं नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, वायर होता है, वायर को हम अज्यूम करते हैं दैट इज अ लेंथ। बट इफ वी assume that wire is having certain dimension, normally हम लेंथ समझते हैं, उसका कोई एरिया नहीं होता है, बट इफ यू assume कि वो थोड़ा थिकनेस भी है, सब कुछ है, तो वॉल्यूम इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ I। सो वी कैन convert this equation into this form. It means work done can be written as sorry, not now, this is not when you convert I into J, this is your I and this is your volume current density kind of thing। एंड आई को आप डीएल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जे को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई को आप डीएल से कर रहे हो तो जे को किससे करना पड़ेगा, डीवी, क्योंकि इट इज अ वॉल्यूम काइंड ऑफ थिंग। मींस इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सो दिस conversion give us the generalized form for the work done, and now this is tau. Tau is the volume, means if you have any particular loop, in that loop it is covering certain area, in that we have a J, and that J is producing certain magnetic field at some point। तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी वही हम डिड्यूस कर रहे हैं। तो W कैन बी इक्वल टू हाफ A डॉट J, एंड नाउ J इज अ वेक्टर, क्योंकि वो एरिया से होता है ना डिसाइड, J बाय मींस करंट बाय एरिया होता है, तो J इज नाउ अ वेक्टर। सो J इज नाउ अ वेक्टर, A इज वेक्टर, ऊपर आई भी वेक्टर ही था, बट आई को अगर नहीं भी वेक्टर लेते हो तो यू कैन राइट डीएल फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो दिस बिकम ए जे डी टाउ। अब इसको हम आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं, देखते हैं, अभी भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में नहीं आया है इक्वेशन। एंड दिस इज योर लूप, दिस इज योर पेरीमीटर, and perimeter is actually loop is covering certain volume, in that volume we have a current density। so this can be written as further half वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया है क्योंकि डेटा हुआ है ना, तो दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल। सो वी कैन राइट, वी आल्सो नो दिस इक्वेशन, डेल क्रॉस बी इज म्यू नॉट जे। व्हाट इज दिस इक्वेशन, differential form of ampere circuit law। ampere circuit law, and that ampere circuit law is precisely for magnetostat where the current is constant।
करंट इज नॉट वेराइंग विथ टाइम, देयर इज नो सोर्स और सिंक, उस इक्वेशन के लिए वैलिड है, बट अभी भी जनरलाइज फॉर्म एग्जैक्टली ये नहीं है, but at least this is valid for electrostat, sorry, magnetostat. So we can write this equation, and what we can get 1 upon 2 mu naught volume integral a dot del cross b d tau. So we know one vector identity, that is, I will write here, del dot a cross b equal to b dot del cross a माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये ध्यान रखना, ये जो आइडेंटिटी लिखा है ना, इसमें ए इज एनी वेक्टर, बी इज एनी वेक्टर। बाय चांस हमारे इस इक्वेशन में ए और बी ही है, ठीक है। ये हमने जनरलाइज किसी, यहाँ में सी भी लिख सकता था, डी भी लिख सकता था, क्यू भी लिख सकता था, वाई भी, कुछ भी लिख सकता था। तो ये वेक्टर आइडेंटिटी है, बट बाय चांस हमारे पास भी जो नोटेशंस है वो ए और बी ही है। ए इज द वेक्टर, so you can relate that. You can see this equation which is here. It means you can replace this by what? इसको इधर लेके आ जाओ, ये माइनस साइन के साथ था तो इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके चले जाओ। तो you just write simply as 1 upon 2 mu naught volume integral b dot del cross a, हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, we just write in a separate way, minus 1 upon 2 mu naught volume integral, other one will be, ये हमारा इधर आया था ना, ये हमारा इधर गया था, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए क्रॉस बी। बाय चांस हमारे पास ए और बी जो है ना, वो यही ए और बी है, बाय चांस है, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पे हमारे पास ए बी लिखते हैं, और यहाँ पे वो शायद ई और दूसरा क्या होता है हमारा, बी और ए होता है, तो दूसरा वहाँ पे वोल्टेज फाई होता है, तो ई और फाई के फॉर्म में आ जाता, तो वहां पे स्केलर आ जाता है, यहाँ पे हमारा दोनों वेक्टर है, तो दैट इज बाय फॉर्चुनेट वी आर गेटिंग द सिमिलर थिंग डी टाउ। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, अब देखो स्टेटमेंट मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, बट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आना है, उसका रीजन क्या है उस आंसर को लाने का। दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड डेल क्रॉस ए क्या होता है, B. बी, सो बी डॉट बी इज बी स्क्वायर। B square. You can simply write that particular thing, and 1 upon 2 mu naught integration, इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट मींस डी टाउ में, दिस इज ए क्रॉस बी है, तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस का एक फॉर्मूला लगा लो, तो इट विल बी, यू कैन कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू अ सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम डेल डॉट में लिखते हैं ए डॉट बी, सॉरी ए क्रॉस बी, तो वेक्टर हमारा ये है ए क्रॉस बी डॉट डी एस लिख सकते हो, व्हाटएवर द सरफेस यू आर हैविंग व्हिच इज एनक्लोजिंग दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। ये सरफेस आपका ये वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है, और इसी सरफेस का पेरीमीटर ऊपर अब जो हमने जो पी लिखा था वो इसी सरफेस का पेरीमीटर है। सो दिस इज नाउ अ सरफेस इंटीग्रल। नाउ इफ यू इंटीग्रेट ओवर ऑल द स्पेस, इट मींस आपने जो वॉल्यूम यहाँ कंसिडर किया था, ऊपर आते हैं, तो अगर मैं इस वॉल्यूम को, मैंने किस वॉल्यूम को कंसिडर किया, जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आई एम जस्ट, देयर इज अ डी टाउ, स्मॉल डी टाउ, एंड आई एम इंटीग्रेटिंग ओवर दिस एरिया व्हाटएवर द वॉल्यूम इज देयर। कोई एब्रप्ट वॉल्यूम हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इफ आई ट्राई टू इंटीग्रेट फॉर अ बिगर वॉल्यूम, तो क्या मेरा रिजल्ट डिफरेंट आएगा? मतलब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इस वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट किया, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ किसी तरीके से, कोई क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से कंसर्न्ड है। अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ तो क्या मेरा वो क्वांटिटी में वेरी आएगा, मतलब क्वांटिटी विल चेंज जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? क्योंकि उस वॉल्यूम के अंदर आपका जो जे है वो तो जे ही है, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज भी कर रहे हो, स्टिल यू डोंट फाइंड एनी एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ करंट। और बेनिफिट क्या हो रहा है कि आप
वॉल्यूम क्या कर सकते हो, यू कैन टेक दैट टू इंफिनिटी. That is a possibility. You can take that volume to infinity. The integration is not going to change. The benefit what you get is that कि वॉल्यूम इंटीग्रल तो एग्जिस्ट करेगा, बट जैसे जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते जा रहे हो तो जो सरफेस पे जो करंट है यानी जे या वॉल्यूम करंट या सरफेस करंट जो भी आपका सरफेस पे, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. तो वॉट एवर द एक्स्ट्रा वॉल्यूम यू आर एडिंग टू दैट इनिशियल वॉल्यूम, your current in those particular volume is decreasing or it may be tending to zero. And as you increase the surface, when you have a bigger surface, because you have increased the volume to infinity, when you have a bigger surface, then A and B will also reduce to zero. ठीक है, यानी अगर मैं इस वॉल्यूम को सिर्फ वॉल्यूम ना लिख करके ऑल स्पेस, then this integration is going to be zero. Only we are left with b square d tau. Clear? ये हमने कहीं इलेक्ट्रोस्टैट में भी ये डिस्कस किया था जब हमने एनर्जी कंपोज्ड और एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था, तब भी ये सेम काइंड ऑफ लॉजिक वहां पे भी था कि एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, only the volume is going to remain, the surface contribution is going to reduce to zero. It means the total energy, और उसका रीजन भी सिंपल है. रीजन क्या है कि आपका जो करंट जे आपने डिसाइड किया था किसी वॉल्यूम में, तो वो आपका उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, चाहे आप इन्फिनिटी पे जाके चेक करो चाहे उसके नीचे जाके चेक करो. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि आपने करंट इंक्रीज नहीं किया. तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे वो इन्फिनिटी पे आप चले जाओ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस और टोटल एनर्जी डेंसिटी, यू विल गेट द सेम वैल्यू. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सिंपल लॉजिक है ये भाई. मैग्नेटिक फील्ड तो तभी चेंज होगा ना जब जे चेंज होगा. अगर जे आपका फिक्स्ड है तो यू कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड. चाहे आप वॉल्यूम बड़ा ले लो, पूरे वॉल्यूम पे आप इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट सेम नंबर ऑफ सेम वैल्यू ऑफ बी. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. क्लियर? This is clear. Yes. I will write this statement properly in the notes, but at least I think this must be clear कि रीजन क्या है कि दूसरा इंटीग्रेशन हमारा जीरो को टेंड करेगा और रह जाएगा सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट, दैट इज बी स्क्वायर डी टाउ. तो आप वॉल्यूम पूरा ले लो, यानी जब भी आप इंटीग्रेट करो जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर लो. दैट विल गिव यू द सेम आंसर इवन इफ यू कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम इन विच द जे इज देयर. ठीक है? So this is the topic, that is energy in a magnetic field, and you can relate that to your electric field also. अगर याद होगा तो electric field का क्या था energy, if you remember, E, उसमें क्या था, E square d tau और एप्सिलॉन नॉट ऊपर था सिर्फ. ये था हमारे पास, ऐसा कुछ था. थोड़ी सी सिमिलैरिटी है दोनों में. ई स्क्वायर डी टाउ, बी स्क्वायर डी टाउ. वहां पे भी हमने यही कहा था कि एक्चुअली जब स्टेटमेंट आया था कि एनर्जी स्टोर्ड होता कहाँ है, चार्जेस में स्टोर्ड है या फील्ड में स्टोर्ड है. अल्टीमेटली वी हैव सेड इन अ बेटर वे दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फील्ड, नॉट इन द चार्जेस. तो यहाँ पे भी वही रीजन आ गया, एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड इन द करंट फॉर्म बट इट इज स्टोर्ड इन द फील्ड फॉर्म. ठीक है? तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, बस उनके कांस्टेंट एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है. अभी तक जितना आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हो उसमें सभी में एप्सिलॉन नॉट ऊपर नीचे जैसे शिफ्ट होगा तो आपका जो म्यू नॉट है वो उसके रिवर्स में शिफ्ट होता रहेगा. ठीक है? बट जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चले जाओगे तो दोनों कांस्टेंट आपस में एक साथ आ जाते हैं. दोनों या तो डिनोमिनेटर में होंगे या तो दोनों न्यूमरेटर में होंगे. ओके, सो